Good evening. Hello. How are you? I hope you're fine. Everything back at home is good and fine. Right. Welcome back again to another session with me. It is our the 38th session what we are doing. We are practicing all the worksheets and everything what we have learned from before. Right. So all those worksheets starting from all the parts of speech and the different forms of different verbs what we learned, right? How to question them, how to answer those questions, okay, all that, even in the terms of speaking what we have talked about. You can look back at the previous sessions also, what we will be discussing, what we had discussed. Today we'll be discussing regarding verbs and collective nouns. सेम एज दैट लाइक लास्ट क्लास ऑल्सो व्हाट वी डिड, राइट? हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने वैसे ही किया था. हम एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हम फिर बाद में वी आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग देम एंड यू गिव डिफरेंट आंसर्स. That way you are able to learn you are able to see how to speak, how to tell an answer also, right? कैसे आप आंसर देंगे, आप उसके बारे में भी आप बात देखते हैं. And then what we discuss, right? I hope you are practicing and coming back again. I have to stress regarding that. I hope you are talking to your friends, you're talking to your family, or you are using these all questions or sentences, simple sentences what you are trying to communicate with others. कुछ नहीं होता है, रोज बात करिएगा, frame simple sentences. Okay, find someone who is very close to you and उनके साथ आप simple sentences बात करिएगा, ठीक है? What did you do in school? How were your exams? How are you preparing? Or anything like that. Today also we have a small topic. आज एक छोटा सा topic है जो हम लोग discuss करेंगे. That is, you'll get to know, right? And याद रखिएगा, मैं आपको हर एक क्लास के बाद एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ to find out different words, right? Those are simple words what you can do. बहुत आसान शब्द होते हैं. यू कैन जस्ट लुक एट दैट एंड आप लोग ढूंढिएगा, उन शब्दों को ढूंढ करके मीनिंग समझने का ट्राई करिएगा. इट माइट बी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होगा सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, बट यस यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पाएंगे कि हाउ द सेंटेंसेस कैन बी मेड, राइट? बहुत आसान है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. Okay, now coming back here, today what we'll be doing is regarding verbs and some collective nouns. Collective nouns आप याद करते हैं, right? Collective nouns वो group of similar kind of things होते हैं, right? Similar kind of things are there in that group and we give a particular for those particular collection of things हम लोग उनको एक नाम देते हैं, right? जैसे आप जानते हैं, आप याद करते हैं, right? Flock, herd of cows, right? Herd of cattle, or a group of similar kind, same kind of things जो हो जाता है, ठीक है? Like a bundle of sticks, राइट? ऐसे जो वर्ड्स हो जाते हैं ये कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आ जाता है. मैं सभी वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देर आर सम सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट आई हैव गिवन देयर फॉर यू एज इन वर्कशीट, सो आई डोंट वांट टू, मैं एग्जांपल्स नहीं दे करके आपको आंसर्स पहले ही नहीं बताना चाहता हूँ, राइट? ओके, सो लेट्स कम गेट इनटू इट फास्ट. जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं. इट इज़ ईजी एंड वेरी सिंपल. इट विल नॉट टेक यू मच टाइम फॉर डूइंग दिस, ठीक है? इट्स ऑल वर्कशीट्स एंड ऑल activity based, so it is fine, right? Just hold on, give me a moment. हाँ, चलिए ये है, let's get into this. Okay, so मैंने आपको कुछ words दिए थे, right? I had given you some words here and you can tell me those meanings there. आप meanings बता सकते हैं. If you know those meanings, it's great. If you do not know, you can just understand from the explanation. मैं यहाँ पे बहुत simple तरीके से उसके हर एक word का meaning दिया हूँ. So what were the 4 words? Diverse, rhythmic, embark and bustling. ठीक है, बहुत आसान शब्द है. It is very easy and simple. ठीक है, embark आप तो जानते होंगे, मैंने लास्ट क्लास में 2-3 बार आपको बताया था. कोई भी चीज़ बिगिन करने के लिए हम बात करते हैं, राइट? यस, डाइवर्स क्या होता है? वहाँ पे शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी और वेरी डिफरेंट. कोई भी चीज़ वहाँ पे अलग अलग है, बहुत सारे चीज़ हैं, डाइवर्स हैं, राइट? तो वो अलग अलग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट रहेंगे, तो दैट इज नोन एज डाइवर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू माइट नो, आपके क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं, राइट? सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर some are fair, some are dark, right? Some wear spectacles, some do not wear spectacles, right? As a different types, different kinds of children are there in your classroom. So आपके classroom में diverse students हैं, right? You can tell it that way. बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं. In our class is diverse. We have students who like different subjects. सब लोगों का subjects भी पसंद अलग अलग होता है, right? So like that you can tell.
जैसे और एक हम लोग लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक रिगार्डिंग गार्डन, राइट। अभी आप अपने गार्डन में खाली यू विल नॉट जस्ट प्लांट fruits, right? You will plant different things. You'll plant flowers, you plant different fruits, right? तो खाली एक ही फ्रूट आप नहीं लगाएंगे, राइट? डाइवर्स करेंगे। और गार्डन इज द गार्डन इज डाइवर्स विथ मैनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट? बहुत सारे फूल और फूल एंड फ्रूट्स आर देयर इन द गार्डन। Okay, like that you can tell it. I'll just write down the sentence. बहुत simple सा sentence मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है? पहले I'll write regarding the class. Our class is diverse. मतलब बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत कोई है, ठीक है? और यहाँ पे क्या के बारे में है? डाइवर्स एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? ओके, हमारा क्लास डाइवर्स है, हमारे क्लास में बहुत कुछ वैरायटी है, बहुत ग्रेट वैरायटी है यहाँ, ठीक है? हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, मैनी चिल्ड्रन लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट? ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट, आई होप आप लोग को समझ में आया। ग्रेट। द नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज देयर इज रिदमिक। रिदमिक आई थिंक यू नो, आप लोग अगर आप डांस करते हैं या फिर म्यूजिक अगर आप सीखते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, राइट, वो आपको उस ये वर्ड का बहुत अच्छे से अंदाज होगा। यू माइट नो द वर्ड रिदमिक प्रॉपर्टी। रिदमिक क्या होता है? समथिंग अकरिंग रेगुलरली, बहुत रेगुलरली होता है। जैसे डांस का जो म्यूजिक होता है या फिर ताल होता है, वो बहुत रिदम के साथ होता है। 2 स्टेप्स फ्रंट, 2 स्टेप्स बैक और 2 पैट्स ऑन द ग्राउंड, ऐसे करके डिफरेंट रिदम में हमेशा रहता है। सेम थिंग, गाने का भी जो ताल होता है वो रिदमिक होता है, एक ही बार में आप ऊपर नहीं उठ जाते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ साउंड, राइट? एक प्रॉपर साउंड फ्लो होने का तरीका होता है, राइट? सो वो हो जाता है फॉर रिदमिक। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप यू कैन ऑल्सो इमेजिन इट दिस वे, ठीक है? जो ड्रमर्स होते हैं, राइट, ड्रमर्स प्ले रिदमिक बीट दैट मेड एवरीवन डांस, ठीक है? ड्रमर जो है बहुत रिदम से जो बीट बजाया जिससे कारण सब लोग नाचना शुरू कर दिए, राइट? ड्रमर प्लेड रिदमिक बीट दैट मेड द एवरीवन डांस। और एक कैसे बोल सकते हैं? वन मोर यू कैन टेल इट दैट, या यस, व्हेन रेन फॉल्स, ठीक है, जब बारिश गिरता है, द रेन ड्रॉप्स फेल ऑन द रूफ इन अ रिदमिक पैटर्न, एक रिदम पैटर्न के साथ गिरा। ओके, बारिश के बूंद ऐसे रिदम एक रेगुलर पैटर्न में गिरा, राइट? दैट आल्सो यू कैन टेल। मैं वो रेनफॉल वाला आई राइट इट डाउन हियर। ओके, द माय बैड, द नेक्स्ट वर्ड आल्सो केम। द रेन fell on the roof, okay, in a rhythmic pattern, okay? ऐसे अच्छे पैटर्न में, मतलब एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में गिरा है। एम्बार्क तो आप लोग जानते हैं, वो बिगिन होता है। कोई भी चीज़ को बिगिन करने के लिए हम लोग एम्बार्क करते हैं, कोई भी एक्शन को बिगिनिंग करने के लिए हम लोग एम्बार्क करते हैं। आप लोग वो सेंटेंस भी जानते हैं, आई थिंक यू नो दो सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है? द फैमिली डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन अ रोड ट्रिप, और आई एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? मैं सबसे सिंपल सेंटेंस यहाँ पे लिख दूंगा। आई राइट द मोस्ट सिंपल वन ओवर हियर, ओके? Okay, the family embarked, okay, and the past form, embarked on the journey for the field trip. Okay, embarked on the journey. Okay, my bad, my handwriting is not that great. Yeah. Okay, you can use that. Family decided, okay, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, decided to embark on a field trip, okay, on a road trip, okay, just on a journey, right? My bad. Okay, the screen got, yeah, I hope you are able to see the screen. Okay, great. On a journey, मैं ऐसे ये करके on the field trip कर देता हूँ, road trip, what I can write. Okay, simple sentences ऐसे आप लोग बनाइएगा. Now, the last word what we have, bustling. ठीक है, bustling आप जानते हैं, moving in an energetic manner और a busy manner, नहीं तो चहल हलचल जो होता है, that is known as bustling.
Okay, the simple sentence would be bustling. The city, the city of Hyderabad is always bustling, right? Or else the main road is always bustling with different vehicles, right? मतलब जो बाहर का रास्ता है, जो मेन रास्ता है, वो हमेशा वहाँ चहल पहल होते रहता है गाड़ियों के कारण. Like that you can understand. ठीक है? The main road is always bustling, to be bustling with different vehicles. Okay, like this. Okay, simple sentences, very simple it is. बहुत आसान से आप देख सकते हैं. These are very simple sentences what I have made. Okay, मैंने एक subject लिखा है यहाँ पे. Please do understand here, rain fell. Okay, rain fell on the roof. Rain fell on the roof. ठीक है, that's rainfall एक जो अलग हो जाता है, उसको fell में आप नहीं ये कर सकता. That is two different things. Our class is diverse. यहाँ पे मैंने कॉमा के साथ दो sentences ये किया है. Two sentences मैंने combine किया. Our class is diverse. Many children like different subject. कॉमा के साथ हमने दो sentences को जोड़ा है. Right? I hope आपको समझ में आया. These are very simple sentences. If you have any doubt that okay, any word if you don't understand ऐसा कुछ है, you want some more synonyms for this one, you can just ask in the comment section, or you can search from yourself और हमें बता सकते हैं with the comment section. So this bustling, can this word be a synonym? क्या ये पर्यायवाची, bustling का ये पर्यायवाची ये हो सकता है? ऐसे भी आप बता सकते हैं. You can search those words. आप लोग search करके बता सकते हैं. Try to play with the dictionary. खेलने का ट्राई करिएगा, ऐसे ढूंढिएगा अलग अलग शब्द. ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट डिक्शनरी. ऑल्दो तो आप इंटरनेट का यूज़ करके आप बहुत सारे शब्द के सिमिलर मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स जैसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमेशा ढूंढ सकते हैं. प्लीज़ डू ट्राई टू डू दैट. ओके, चलिए आज चलते हैं. आज का एक बहुत सिंपल टॉपिक होगा, वो ऑन गोइंग थिंग्स ऑफ द बोर्ड, द एग्जाम्स व्हाट यू आर गोइंग टू हैव. ठीक है, एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग थोड़े क्वेश्चंस आज पूछेंगे, एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे. ऑल द थिंग्स, how you prepare, all those questions we'll ask. In fact, I will also tell you few things about how I prepared for my exams, how I do prepare now also for my exams if I get in between. Right? So let's get into that. Okay. सबसे basic, सबसे the most important question. Do you like exams, children? Do you like exams? Do you like to write exams? Okay. What would be your answer for this? Yeah. Okay. If you like yes, अगर आपको पसंद है एग्जाम्स तो yes, I do like exams. I like to challenge myself. Right? मुझे challenge अच्छा लगता है, challenge करना अपने आप को अच्छा लगता है. You can say I like to challenge myself. Right? And also I get to know where I lack. मेरी कमियां मुझे पता चलती हैं. Right? वैसे आप बोल सकते हैं. Like that you can tell. Okay? जैसे I like exams. Yes, I do like exams because it is important to know regarding yourself, right? How much you know, how much you do not know. That is necessary, right? So liking exams cannot be a direct question there, but yeah, answer should be answer. आप मतलब समझ पा रहे हैं to have a conversation, right? Next question there. What is your favorite subject to study for? Okay, the study for the exam and why, right? With आपका कौन सा subject, which is your favorite subject to study, and why do you like to study? Okay, so my favorite subjects are social science and English. I really am good at these two subjects. That's why these both have been my favorite subjects all the time, right? Why? Because I remember a lot of things. I retain a lot of things in my mind. मैं अपने दिमाग में बहुत चीज़ रख पाता हूँ. That's why I like that, right? Social science is a subject where you have to retain many things, and English is similar to that, but it is more of how you express. आप कैसे बात करते हैं? How do you tell things? How do you write things? So that is also the similar thing. Right, so these are my favorite subjects, and this is why I like them, because I can remember most of those things. Aapka it might be different. You might like maths, you might like sciences, you might like some other subjects, right? आप लोगों का it might be something different. Okay, if you have anything, you can. आप लोग बस ये try करिएगा. Just I hope आप लोग को ये समझ में आ रहा है why I have given you these questions. Okay, ये questions से आप you read the question and try to give your own answer. आप ये question पढ़िए and आप अपने तरीके से कुछ आंसर दीजिएगा. It can be in Hindi, but try to make that sentence in English.
जैसे do you like exams? Yes sir, I do like exams. Okay, no sir, I do not like exams. I am little scared of exams. ऐसे आप बोल सकते हैं, you can tell that. Which is, what is your favorite subject to study? My favorite subjects are maths and science. Why? Because it might आपके लिए वो creative होगा. It's very creative and you solve a lot of problems. You learn a lot of things in science. Okay, you might have some different interest in that. वैसे आप बता सकते हैं. How do you prepare for your exams? Okay, that is, everybody's preparation is quite different. Okay, I will tell you how I used to prepare for exams, do still how I do whenever I get some exams in between, right? So I have notes. I have made different notes for different subjects, okay? And from those different subjects, what happens is that I read it once. मैं revise करता हूँ उसे. हमेशा जब भी exams आते हैं तो I revise them. So writing your notes and then revising them, it's one good thing to prepare for your exams, and continuous revision is one of the best things where you can get the command of whatever you are learning to remember it. It helps you to remember, and you can use that knowledge, whatever you have gained in writing those examinations. I'll repeat that in Hindi also. नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट नोट्स. बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स लिखना. इस नोट्स लिखेंगे तो आप कभी भी उसे आप पढ़ सकते हैं. एग्जामिनेशन के पहले अगर आप इधर उधर भागने के बजाय आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे, नोट्स में आपने जो भी पॉइंट्स पढ़ा है तो आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा. एंड बार बार रिपीट करके करेंगे, देन आपको वो रिटेन हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा. And then when you write those examinations, you will remember. आप लोग जब examination लिखेंगे तभी आपको याद आएगा और आप लिख पाएंगे आसानी से. You will be able to write that well. Okay. Now the most important questions. Are you scared of the result of your exams? क्या आपको डर लगता है result से? Yes, I am little bit scared of the results because sometimes it's good, sometimes it's bad. But yeah, I am little scared. Yes, if you are also scared like me, अगर आप लोग भी डरते हैं, you can also say yes sir, we are scared of the results. और अगर आप नहीं डरते हैं तो it's great, it's absolutely awesome, right? Because sir, we are not scared of exams. No sir, we are not scared of exams. Exam results, you can tell that. We prepare well, so we are not scared. ऐसे आप कह सकते हैं, right? मैंने मेहनत किया है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसलिए मैं एग्जामिनेशन रिजल्ट से डर नहीं लगता, right? Okay, yes. Now the other question, do you take breaks during the preparation of exams? क्या आप breaks लेते हैं क्या जब भी आप prepare करते हैं examinations के लिए? Do you take little breaks? Okay, yeah. You should take you should take breaks when you are preparing for exams. Little breaks, not like एक घंटा पढ़ लिया और 4 घंटा भाग गए. That is not the way. You should take small breaks like 15 to 20 minutes, not more than half an hour, so that you can rest, replenish all the energy what you have lost. Okay, then again come back, you will come with fresher ideas. Okay, so while preparing you should always take breaks. Why? Because then only your mind will be fresh, right? Not fresh, it will be active continuously. If you sit for a longer time like 6-7 hours continuously, if you start reading, आप लोग सो जाएंगे. if अगर आप 6 घंटा 5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे तो आप सो जाएंगे. That doesn't happen. Take proper amounts of breaks, जैसे 4 तो if you have read for 30 minutes or 45 minutes, right? 15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, खाना खाइएगा, कुछ पानी पीजिएगा, और else go out, go for a walk and then come back again after 20 minutes, again start. ऐसे always you need to take small breaks when you are preparing, right? That is how even I used to do. I remember when in my 10th examination, okay, what would happen is I would study for 1 hour, 15 minutes I would take rest. I would say my mother, please remind me. मैं 15 मिनट बोलता था मैं रेस्ट करूँगा, मुझे याद दिला दीजिएगा. And my mother was very push करती थी. So she would always say that yes, it's time for you to study. Come on, get up and do something, right? So this is how you should always do. Always keep a timetable. याद रखिएगा, timetable रखा बना के रखिएगा. That will really help. Okay, enough of that. Let's come back here and let's do the activities what we were doing, right? Chaliye, I have again today a paragraph here regarding an exam day. It is a boy named Raj who lived in a quiet town, and what happens is that we'll read it together. Children, you can who are quite familiar with writing, because this, I think it's a 4th or 5th
वर्कशीट व्हाट वी आर डूइंग रिगार्डिंग वर्ब्स, ठीक है, एक पैराग्राफ देता हूँ वेर यू आर राइटिंग द डिफरेंट वर्ब्स, रीडिंग द सेंटेंसेस. हु आर गुड एट दिस यू कैन कंटिन्यू, आप लोग वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट द आंसर दैट. Who want to do it together with me, listening to the story and understanding that also can be done. Or if you do not, अगर आपको नहीं समझ में आता है द सेंटेंसेस, नो प्रॉब्लम, आप लोग मेरे साथ साथ में भी कर सकते हैं. राइट, द राइट मोमेंट फॉर यू टू पॉज एंड लेट अस कंटिन्यू विद द पैसेज ओवर हियर. राइट, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. इन अ क्वाइट टाउन देयर लिव्ड अ diligent student named Raj. He dashed preparing for his exam months in advance, final exam months in advance. Every day after school he dashed several hours studying and completing assignments. Right, बताइएगा. He past form, he dash preparing for his exams months in advance. Right? Yeah, begin, began, begun. ठीक है, begun is for verbs fourth form. ये एक irregular verb है. Right? So मैं ये combinations के साथ दे रहा हूँ. There are regular verbs also, there are irregular verbs also. All the time I have given you regular verbs क्योंकि ed forms के साथ आते हैं. There are some times where you also need to know regarding irregular verbs also. Right? Begin, began. Okay, Raj began preparing for his exams. Okay, months in advance. ठीक है, महीनों पहले वो शुरू कर दिया था प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए. Every day after school he dashed several hours studying and completing exams. Every day after school he prepared. Okay, not prepared. The verb shouldn't be prepared over here. Prepare नहीं होना चाहिए. Okay, what can be there? We should use a different verb. Every day after school he studied for several hours. Okay, हाँ, ये वाला ना, studying shouldn't be there. Should be study over here. Okay, after school he studied. Yes, studied several hours and completing assignment. Studied for several hours and completed assignments. Little errors, small errors, please neglect. बस ये verb का ये बात कर लीजिएगा. Every day after school he studied several hours and completed assignments. बहुत पढ़ाई किया, बहुत assignments complete किया. Right after the school when he came back home. Right, as the exam days dash, Raj's focus and determination dash. He read his notes dash, saw practice papers and sought guidance from his teachers whenever he faced challenges. Obviously आप लोग भी वही करते हैं. जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं आप क्या करते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है, आप लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं. आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप लोग अपनी टीचर्स के पास जा कर के पूछते हैं. राइट, आप लोग डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर्स, रिविजन कॉपीज आप लेके आते हैं, रिविजन प्रॉब्लम्स जो है फिर से वो सॉल्व करते हैं. राइट, दैट्स व्हाई एज एग्जाम्स अप्रोच्ड, यस, approached, Raj's focus and determination increased. Increase हो गया. ठीक है, he read his notes, solved practice papers. ठीक है, practice papers and sought guidance from his teachers whenever he faced challenges. The night before the exam, Raj dashed a mix of nervousness and excitement. He dashed through his notes one last time and dashed to get the good night's sleep. राइट, नाइट बिफोर एग्जाम राज, फील का क्या होता है पास्ट फॉर्म, फेल्ट. अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, दोनों चीज़ होता है. ठीक है, डर भी लगता है कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या याद नहीं आएगा. एक्साइटमेंट भी लगता है, यस एग्जामिनेशन आ रहा है, इट इज़ द वन चांस, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, मैं इतने दिनों बैठ करके प्रिपेयर कर रहा था, मैं आखिरी दिन आ गया है. तो बोथ थिंग्स होते हैं. एवरीबडी गेट्स दैट फीलिंग, दे गेट नर्वस, दे गेट एक्साइटेड. राइट, ही dashed through his notes. Okay, went, go ka past form, went through his notes one last time and try ka past form, tried, yes, tried to get a good night's sleep. ठीक है, it's very important. ठीक है, रात जो एग्जामिनेशन के पहले वाला दिन है, you should get a good night's sleep. Right, अच्छे से सोना चाहिए. If you do not get good sleep on that day, then your examination will not be good. Right, अच्छे से सोने का ट्राई करिएगा. Don't try to prepare everything beforehand. Last day you should keep it left over on that time. Right, chaliye, let's move for the next one then. Here again there are some more blanks here. Children who have who know
आप लोग अगर अच्छे से बता सकते हैं दैट इज ग्रेट. हु आर विथ मी, अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहते हैं रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ्स, यू कैन डू इट विथ मी. One, on the morning of the exam, Raj dashed up early and dashed key concepts. He dashed to the examination center. He dashed on the hard work. He dashed put. Sorry about that. Okay, as he dashed to the examination center, he dashed on the hard work. He dashed put on his studies. Right? You can use any of these verbs. Verb के past form आप बता सकते हैं. On the morning of exam, Raj woke up early. Oh, my bad. Okay. Yeah. Oh, what is this? What is this? Why is this like this? Huh. Yeah. Woke up early. Right? Woke up early. Wake का woke हो जाता है. And revise दोहराना, फिर से दोहरा लिया. ठीक है? Revised. Right? Revise the key concepts as he dashed to the examination center. Right? He walked. ठीक है? Walked to the examination centers. He dashed on the hard work. Okay. He reflected on the hard work he had put on his studies. Right? have का had हो जाता है और जो भी मेहनत किया वो रिफ्लेक्ट करने के लिए वो बहुत अच्छे से मतलब सोचते हुए गया. ठीक है. Now during the examination, Raj dashed each questions carefully, drawing on knowledge he dashed during the preparation period. During examination, Raj answered, very good, answered each question carefully, drawing on the knowledge he learned, right? Learned during the preparation period, right? हमेशा याद रखिएगा, these all paragraphs, whatever is there, ठीक है, whatever are there here, you just need to read the sentences again. एक बार सेंटेंस खुद से पढ़िएगा. मैं वहाँ पे वर्ब दिया हुआ हूँ. जनरली ये स्टोरी सब, ऑल द स्टोरीज आर इन द पास्ट फॉर्म्स. नाउ ये डिपेंड करेगा, जब आप बोलते समय, आप पढ़ते समय तो आप ऐसे बता सकते हैं, बट व्हेन यू आर कन्वर्जेशन करते समय आपको, आप वहाँ पे पास्ट फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं. जैसे आई एम आंसरिंग अ आंसर, मैं आंसर कर रहा हूँ एक आंसर, नॉट आंसरिंग. वी आर लर्निंग. ठीक है, आर लर्निंग, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं. राइट. वी हैव लर्नड. ओके, वी लर्नड. ठीक है, तो हम लोग सीख लिए हैं इसके बारे में. लाइक दिस यू विल हैव टू सी विच काइंड ऑफ टेंस इट कम्स. ठीक है. नाउ सम क्वेश्चंस अगेन रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ. सिंपल क्वेश्चंस व्हाट आर देयर. ओके, देखिएगा. When did Raj prepare his final exams? कब राज प्रिपेयर किया था the final exams? In advance. Yes, Raj began preparing his final exams in advance, before the examination have started, months before the examination started. I mean, we're going to start. Raj began preparing his exams, his final exams, months before. राइट, बहुत पहले से शुरू कर दिया था. राइट, यहाँ देखिएगा हाउ आई हैव रिटन द सेंटेंस. सब्जेक्ट, वर्ब, हिज ऑब्जेक्ट एंड देन द टाइम ऑल्सो. ठीक है, मंथ्स बिफोर, इन एडवांस, ऐसे आप बोल सकते हैं. यू कैन टेल दैट ऑल्सो. वाई, व्हाट डिड राज डू द नाइट बिफोर एग्जाम्स? एक रात पहले राज क्या किया था? यू कैन जस्ट लुक बैक अगेन इफ यू हैव. राइट, वन, दिस इज द मॉर्निंग. ओके, नाइट क्या किया था? ओके, ही वेंट थ्रू द नोट्स लास्ट टाइम एंड ट्राइड टू गेट अ गुड नाइट स्लीप. राइट, उसने क्या किया? उसने अपना नोट्स ठीक से देखा. ठीक है, ही, राज, वेंट थ्रू हिज नोट्स My bad, I'm not able to write properly. Wait, hold on. Raj went through his notes and tried to get good sleep. ठीक है, two sentences I am using here. ठीक है, वो अपना notes देखा. ठीक है, अच्छे से देखा वहाँ पे, अच्छे से सोने का ट्राई किया. Right. How did Raj feel in the night? Feel
इन द नाइट बिफोर द एग्जाम, एक रात पहले एग्जाम के पहले कैसा फीलिंग था, यू कैन जस्ट लुक बैक अगेन। यहाँ देखिएगा व्हाट, अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। राज फेल्ट अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, यू कैन राइट। ओके राज, माय बैड सॉरी। ओके मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, राज फेल्ट okay nervous and excited before night before exam, right? आप लोग ऐसे बता सकते हैं। okay now the last one here, would you like to answer? What did Raj do in the examination? Raj क्या किया था एग्जामिनेशन में? right, answered carefully, ठीक है, अच्छे से आंसर किया, जो भी वो सीखा था अच्छे से उसने आंसर किया। so how will you tell that? Raj, my bad again, sorry. okay let's yeah, Raj okay answered the answers carefully, okay, answered the answers carefully, all what he has learned, all that what he not, or else ऐसे नहीं लिखता है, let's write it in a simple way, we'll just see here। okay क्या था? okay carefully, drawing out the knowledge नहीं, we can make it simple, ठीक है, answers carefully what he learned, okay जो भी वो सीखा वो अच्छे से ट्राई किया आंसर के लिए। okay carefully what he had learned, ठीक है, जो भी है, राइट। सो ऑब्जर्व दो सेंटेंसेस, बहुत सिंपल से हमने बात किया, हमने कंजंक्शंस यूज किया, सम सेंटेंसेस हमने कॉमा डाल करके बात किया, सम सेंटेंसेस हमने सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया है, राइट। ऑल दीज वर WH क्वेश्चंस देयर इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग को ये आंसर समझ में आया हियर। ग्रेट, ओके लेट मी जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ग्रेट, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके नाउ दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे आपको देख करके बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। देयर आर सम वर्ड्स विच माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़े कलेक्टिव नाउन्स मुश्किल भी होते हैं, राइट। यू विल नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। देयर आर सम वर्ड्स विच ओके याद हो सकता है, याद नहीं भी हो सकता है। Children who know regarding them, you can just pause the video, write the whole sentence with the correct answer and I will discuss that. मैं discuss करूँगा तभी जब आप उनका answers बता दूँगा। It is simple. Okay, now let me first sentence, what are there? A dash of sheep graze peacefully in the meadows. Right, graze क्या होता है? चरना, वहाँ पे घास खाना, what you can say। हम लोग sheep के लिए क्या क्या collective noun बात करते हैं? Yes, herd of sheep. My bad, head of sheep I have written. Herd of sheep gaze peacefully in the meadows, like that what you can tell. Okay, let me use another color also. Okay, dash of musicians played at the concert. ठीक है, musicians का क्या होता है? It is always a band of musicians, right? Next color, which color should I choose, children? Should I use maroon? Yeah. Okay, the dash of wolves howled at the moonlight. ठीक है, what? Yes, pack of wolves होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, pack of wolves, what are they, right? Okay, dash of bees buzzed around the hive. bees का झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? दो था, मैंने आपको बताया था, अच्छे से सिखाया भी था, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया था। Yes, now in this there is only swarm, तो आप swarm ही बता देंगे, swarm of bees buzz around the hive। लेकिन hive of bees भी आप कहते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, that is known as hive, right? Swarm of bees, hive of bees, both of them are right. Okay, but here the options are in swarm, right? Correct. Okay, let me move forward. Yeah, चलिए, I gave my teacher, okay, a dash of flowers. Yes, bouquet of flowers, right? Bouquet of flowers. The dash of the students were excited about the trip. ये वाला क्या हो सकता है? It cannot be army, it cannot be herd of students, it cannot be pride. Yes, class of students. Yes, class of students were excited about the field trip.
The dash of ants march in straight line carrying food on their nest, to their nest, sorry my bad, carrying food to their nest. एंट्स लोग ना एक कॉलोनी में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कॉलोनीज होता है, राइट। ज़मीन के अंदर होता है, न तो कहीं कहीं ठंड जगह सब में वे रहता है, राइट। हमेशा एंट्स एक कॉलोनी में रहते हैं, याद रखिएगा चिल्ड्रन, एंट्स लिव इन अ कॉलोनी, राइट। A dash of dancers performed a breathtaking routine on stage. Okay, now what is that? There should be a dash over here. या एग्जैक्टली अगर आपने ट्रूप कहा है इट इज राइट। पैक ऑफ डांसर्स नहीं होता, आर्मी ऑफ डांसर्स नहीं होता, ठीक है, ट्रूप होता है, ट्रूप ऑफ डांसर्स होता है, ठीक है, एक ग्रुप रहता है उन लोगों का, ठीक है। दैट कैन बी सेट फॉर दिस। आई होप आप लोग को समझ में आया। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर देम। आप लोग इसमें कुछ नया नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो मीनिंग, दैट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लास जो हो जाता है, ग्रुप हो जाता है जहाँ पे हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ते रहते हैं। इट्स इज बेटर दैट यू रिमेंबर देम। Okay, yeah, let's move forward. Okay, a dash of books on the shelf caught her attention. Okay, now what word can it be? Yes, a collection. Yeah, collection, not library. Library is a place where books are kept. Yes, a collection of books. Collection of books caught her attention. Okay, the dash of two soldiers march proudly in the parade. Right? Yes, troop. The troop of soldiers march proudly in the parade. Right? Collective nouns, we need to practice more. Right? It is never less. हम लोग को और practice करते रहना है. You have to keep practicing most of the times. Right? Then only you'll remember those words and sentences. Right? But collective nouns is another challenge. ये थोड़ा challenging रहता है क्योंकि बहुत सारे हैं. There are countless. You will not be able to remember all of them. You need some of them which will be necessarily used while talking. जब भी आप बात कर रहे हैं while speaking things, then you might तभी आप use कर सकते हैं, but not every time it is used. Right? So this is the last question for collective nouns here, and yeah, coming back here for the homework part. Right, this will be your homework. The 4 words what you will find: diligent, determination, guidance and concept. ठीक है, ये आप लोग ढूंढेंगे, आप लोग इसके वर्ड मीनिंग्स लेके आएंगे, एंड वील ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस विद दैट। सिंपल सेंटेंसेस, डिलिजेंट, डिटर्मिनेशन, दीज वर्ड्स आर लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी डिफिकल्ट हैं व्हाट आई हैव गिवन यू, बट या जस्ट ट्राई टू फाइंड द वर्ड मीनिंग दैट, इट्स फाइन। आई विल हेल्प यू विद द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा, राइट? ओके, आई होप आज आपका सेशन, आपको आज का सेशन समझ में आया। दैट वाज नॉट मच, okay, but there were a lot of sentences and things what we discussed. Collective nouns के बारे में यही रहता है कि there are many things what are there, right? हम लोग ऐसे ही activities कर करके what we will be discussing things, right? Okay, so please do practice again and again. I say आप लोग practice करिएगा. Yeah, I'll stop the share now. Yeah, please practice करिएगा. Sentences frame करिएगा, simple sentences what you can read, and पढ़िएगा, read different articles, थोड़े small stories, small articles if you read, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आता है कैसे sentence frame किया जाता है. Me telling here thousands or hundreds of sentences, it is one thing. आप लोग ये सेशंस देख रहे होंगे वो एक अलग चीज़ है, आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, बट येस यू विल हैव टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम योर ओन साइड, आपके तरफ से भी पढ़ना रहेगा. Okay, please do practice, and yes, that I hope that will be it for today, right? If any doubts if you have regarding today's session, आप लोगों को कोई भी शब्द ऐसा लगे, कुछ भी चीज़ है जो डाउट है, you can just share it with us in the comment section. We'll be happy to help you, right? And yeah, if you like the session, today's session, please share a like and subscribe to the channel there. Okay, that will be it for today, children. We'll meet again in the next session. I hope you liked this, and yeah, thank you.